Hello friends, I am going to make the tab. सबसे पहले हम गाइडलाइन बनाएंगे। सो गाइस, हमारी गाइडलाइन बन गई है। अब मैं स्केच कर रहा हूँ। जो हमारी गाइडलाइन है उसी से हम स्केच को कंप्लीट करेंगे। स्केचिंग करते टाइम हमें रेफरेंस की भी हेल्प लेनी होगी। सो गाइस, हमारा बाहर का स्केच बन चुका है। अब हमें अंदर की लाइंस बनानी है जो हमारे रेफरेंस में है। हमारा स्केच रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। कलर पेंसिल प्लस स्केच पेन प्लस जेली रोल पेन, दोनों टाइप के, एंड एक्रेलिक कलर और वाटर कलर। सबसे पहले हम वाटर कलर का यूज़ करेंगे। बाद मार्कर का यूज़ करेंगे जो लाइन हमारी रेफरेंस में बनी हुई है। दोस्तों, ये सब हमें रेफरेंस फ़ोटो में से देखकर बनाना है। दोस्तों, हमें कलर्स का ध्यान रखना है, किस किस जगह हमने कौन सा कलर यूज़ किया है। सो गाइस, वाटर कलर के ऊपर हम कलर पेंसिल का भी यूज़ करेंगे और स्केच पेन का भी यूज़ करेंगे और एक्रेलिक कलर का भी यूज़ करेंगे ताकि कलर और अच्छा दिखाई दे। दोस्तों, ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, इसके अंदर हम एक्रेलिक कलर देंगे ताकि ये स्टील की तरह दिखाई दे। इसी टेक्निक से हम पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गो। In my head, it don't even matter what you think you said. 'Cause I got my eyes
Now we will make a shadow in it. If you have any questions and answer, Instagram and Facebook, contact me.